Welcome back, Sanskarians. So, first of all, good morning. I hope you all are well. So, this is your second video and our fourth chapter of our SST. That is the weather and climate. So, as you all know, that in day to day we are looking that every day our weather is changed. That we are telling that our weather is changed or our climate is changed. सो व्हाट इज दैट मीन्स कि अपन जो लोग देखते हैं सारे सब मिलके कि भाई क्या हो रहा होता है पूरे दिन में, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक जो पूरा टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी क्या होती हैं, चेंजेस होती रहती हैं. तो ऐसा क्यों होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट वेदर एंड क्लाइमेट स्टैंड्स फॉर, ठीक है. दिस इज योर फोर्थ चैप्टर ऑल्सो एंड द डे टू डे लाइफ वी आर लुकिंग दैट ऑल्सो. So just look students that what is the first of all what is the weather means what to which thing we are calling as weather. So day to day change in our daily life or we can say that weather means it is a day to day change in our temperature, that is known as weather. Okay, again I am repeating what is weather. Weather means day to day change in our temperature, that is known as weather of a particular place. Means day to day change means that in the morning period of the time the temperature is high or it might be low. In morning time the temperature is low, we can say that it is cool also, but as soon as it is going towards the evening time or when we are moving from morning to evening time, then we are looking that from morning to evening there are the so many changes in the temperature. Means in the morning time it was cold, then it become again little bit hot, then in the noon time it is hot, very much hot, and in the evening time again the temperature goes down, and in nights become again cooler. So that is the change, that is the day to day change in our temperature, that is known as our weather. Got it beta? Then second point is coming out that what is the climate. Now see, day to day change is known as weather. Then what will be the climate? Climate means it is a total average of the weather throughout the year of a particular place. मतलब अपना जो पूरी वेदर रही है, ठीक है, थ्रूआउट वेदर थ्रूआउट ईयर, उसका टोटल एवरेज, दैट इज द नोन एज क्लाइमेट. क्या होता है क्लाइमेट? इट मीन्स it is the total sum of weather, it is the total average of the weather throughout the year, that is known as climate. How? Look, means how it will be the average means it is not possible that every day the temperature remains same, or it is not possible or it is not mandatory anywhere that every day which we are facing in our daily life that remains the same throughout our life or throughout that year, particular year. Means it is changes from the time to time also. Like firstly it was some summer, then it becomes rainy, after that it becomes winter also. So at that period of time the temperature will be decreasing, might be increasing, okay. So it totally depends upon that day, okay. Like that also we are looking that in the daytime it is not a cloudy, but as soon as we are passing the time then it is becoming the cloudy also. So that we cannot determine, it is totally a natural phenomena. But climate means it is a total average of our weather throughout the year. Means when we are adding up throughout year, whole year we are just changing, we are watching the changes in our period of time. What we will do, we will take this average of that all the weathers and we will divide by, so that will become that the particular climate. Got it beta? So that will be the climate of that particular place. Now there are some factors that determine the climate. Means there are some these 5 factors are there which will determine the climate. Got it? Like what are those factors? Means how they will be determining, let's see. The first is distance from the equator. Okay. Like if I tell this is our earth, this is our earth and this is our sun,
and this is our, suppose this is the equator. Got it beta? So what will happen when the sun rays are falling on this earth, then their places near the equator or near the place where the sun rays are totally coinciding or they are totally falling, that places are having the temperature high or their climate will be different from the place which are receiving the sunlight less in amount. Why? Because of the slanting sun rays. Again I am repeating, what is the first point, what are the factors that determines the climate of a particular place. In that first is distance from the equator, means कि जो चीज जो प्लेसेस जो इक्वेटर के पास में, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है अपनी जो अर्थ रेज है, सॉरी सन की जो रेज है, दैट दे आर फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, कि वो सारे क्या इक्वेटर के आसपास में क्या होते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली फॉल करते हैं. तो उस वजह से क्या होगा कि जो भी रीजन है जो इक्वेटर के आसपास में, वो रीजन क्या करेगा, मोर नंबर ऑफ हीट विल रिसीव, ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर विल बी हायर, एंड दोज प्लेसेस विच आर फार फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, जो भी प्लेसेस हैं जितने फार है वो लेस क्या होंगे, हीट होंगे. क्यों? क्योंकि उन पे जो सनरेज हैं वो कैसी होंगी, ऐसे स्लांटिंग सनरेज होंगी, नॉट डायरेक्ट, ऐसे स्लांटिंग होंगी. तो उनकी वजह से होगी सनरेज को मोर डिस्टेंस कवर अप करनी पड़ेगी. तो उससे क्या होगा कि अपनी जो डिस्टेंस कवर अप करनी पड़ेगी, तो वहां पे जो हीट होती है सनरेज की, दैट विल बी लेस, सो दैट प्लेस टेम्परेचर विल बी वेरी लो. सो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द पर्टिकुलर क्लाइमेट. सेकंड इज हाइट अबव द सी. Height above the sea level means it is not that we are having a sea and we are above the height, it will be known as, so height above the sea is known as altitude, that is known as altitude. मतलब means कि we have marked a position, a point we have marked out, ठीक है, that from this point we will take the all the things that are going upside, ठीक है, कि अपन ने क्या किया, एक पॉइंट को मार्क कर दिया, ठीक है, अपन उस पॉइंट से क्या करते हैं कि हर एक चीज की जो हाइट होती है वो अपन मेजर करते हैं. दैट पॉइंट इज नोन एज लेवल्ड पॉइंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, लेवल्ड पॉइंट बोलते हैं. और जितनी भी हाइट पे हो जाएंगी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं. सो एज वी विल गो अपर द टेम्परेचर विल बी गोइंग डाउन, गॉट इट, एंड एज वी आर लिविंग नियर बाय दैट एट दैट प्लेस द एल्टीट्यूड टेम्परेचर विल बी हाई, कि ऊपर जाएंगे उतना ही अपना जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डाउन होगा, और जितना ही अपन एल्टीट्यूड के पास में रहेंगे उतना ही टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा. व्हाट इज बेटा. थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. लुक, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, व्हाट इट मींस कि दोस प्लेसेस व्हिच आर फार फ्रॉम द सी दे आर मच मोर फेसिंग द चेंजेस इन देयर क्लाइमेट्स, ठीक है. कैसे कि जितने भी प्लेसेस हैं जो सी के आसपास में, ठीक है, वहां पे नाइदर दे आर टू कोल्ड और नाइदर दे आर टू हॉट, दे आर मॉडरेट, बट सम प्लेसेस व्हिच आर फार फ्रॉम द सी दैट माइट बी टू कोल्ड और दे माइट बी टू हॉट. लाइक इफ आई टॉक इन द विंटर पीरियड ऑफ द टाइम द दिल्ली बिकम्स द मोस्ट कोल्ड, बट इन द समर पीरियड ऑफ द टाइम द राजस्थान बिकम द मोस्ट हॉट, ठीक है. सो दैट इज द फैक्टर दैट डिटरमाइंस आवर द क्लाइमेट. That is the third point, that as much as the place will be far or they will be far from the sea, there will be much more difference in their temperature also. Now fourth point is the direction of the winds. So the direction of the wind means as we are passing or as we are seeing that when the winds are blowing, means जब वो बहती हैं, हवाएं जब बहती हैं, ठीक है, तो जितनी भी हवाएं होंगी that are blowing from the colder region they will become the कोल्डर टेम्परेचर, कि जितनी भी हवाएं जो कोल्डर टेम्परेचर से बहती होंगी दे विल बी फेसिंग द ओनली द कोल्डर टेम्परेचर, और दोज विंड्स व्हिच आर ब्लोइंग इन द हायर पीरियड ऑफ द टाइम और हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स द हायर टेम्परेचर हॉटर प्लेसेस दे आर हैविंग द हायर टेम्परेचर. फिफ्थ पॉइंट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन्स, ह्यूमिडिटी इज आल्सो अनदर फैक्टर व्हिच इज डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट. It is the last and important because at a place when we are facing the sun rain falls at that period of the time what amount of the moisture will be carrying out towards the earth surface, कि कितना moisture है जो अपनी अर्थ है वो निकालती है. So that will also depend upon the humidity, means those places which are just nearby the sea,
कि जितने भी प्लेसेज हैं जहाँ पे सी के आसपास में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, अपनी ह्यूमिडिटी होती है। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर दैट व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेदर मीन्स इट इज द डे टू डे चेंज इन द टेम्परेचर, दैट इज weather. What is climate? Climate means it is the total average of the weather throughout the year. So these are the 5 points which we have looked that are determining the climate. Means these 5 factors will helpful in the determination of climate of a particular place. What beta? So I hope you got all your points. I hope you understand well. Thank you beta. Thank you so much.